अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं उनमें नंबर 1 पे है जी रीप्रिंटेबल पेपर। रीप्रिंटेबल पेपर क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं, तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक जो आज डिस्कस करना है वो है वीआर सिस्टम दैट मूव्स योर बॉडी फॉर यू। वीआर सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से आपकी बॉडी को मूव करता है, तो ये जो है ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज़ रीप्रिंटेबल पेपर। रीप्रिंटेबल पेपर क्या होता है। पेपर इज़ जनरली सीन as a greener material than plastic, largely because plastic is seen as artificial while paper feels more natural. Certainly, paper is more easily recycled, but it comes with its own environmental costs, which include cutting down trees, processing, and transportation via BBC. Reducing overuse of plastic is one way to minimize our impact on the environment, but we also need better ways to reduce paper usage and reuse it when possible. Reusing paper can be difficult, particularly if you have already written or printed something on it. There's little you can do aside from fold it into a paper airplane or chuck it in the recycling bin. Now, according to a paper published in the Journal Advanced Materials, reusing your paper might get a lot easier. Scientists from the Nanyang Technological University in Singapore have developed a new class of paper made from pollen instead of wood pulp. Pollen may be a greener material in and of itself because it's already produced en masse via Science Daily, but this paper can also be readily used again. Researchers put their pollen paper through a process that makes it non-allergenic and then printed on it using a standard laser printed, treating it with an alkaline solution, removed all of the printed material without damaging the paper, allowing it to be used again. In tests, they were able to reuse their paper at least 8 times, making it the ultimate in recyclable paper. जी तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक रीप्रिंटेबल पेपर के बारे में। इसको हमने डिस्कस किया कि रीप्रिंटेबल पेपर क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी वीआर सिस्टम दैट मूव्स योर बॉडी फॉर यू। There's nothing better than virtual reality for total immersions, but it's still lacking a tactile element that would really help the technology level up. According to a recent paper, researchers at the University of Chicago have developed a virtual and augmented reality system which moves the user's body for them at least some of the time. Pads positioned on the neck muscles use electrical muscle stimulation to take control of a player's body and move it. In a fire safety demonstration, the technology was used to guide a player's eye line
toward the location of a fire extinguisher or live fire. Additional demonstrations moved a player's head in response to a punch from a virtual boxing opponent. Importantly, this system senses what the user is doing in real time and only initiates an involuntary movement when the muscles are not otherwise activated. So there is no risk of injury as a result of a triggered motion, even if you are being punched in VR. Researchers believe this could change the way VR and AR experiences are developed by removing the need to add visual cause guiding a player. जी तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।